section formula. What do you mean by section formula? Let ax1 y1 and bx2 y2 are two distinct points, okay? And you know very well two distinct points always determine a unique line, okay? These are the two distinct points in a plane. प्लेन के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है. लेट pxy is a point on AB. Divide line segment AB in ratio M1 is to M2 internally from A. Suppose point PXY is a point divide line segment AB in ratio M1 is to M2 internally from A. Then the coordinates of point coordinates of point P are given by the formula m1x2 plus m2x1 upon m plus n. This is the x coordinate of P. And y coordinate is m1 y2 plus m1 y1, m1 y2 plus m2 y1 upon m plus n. Cross multiplication. m1 x2 plus m2 x1 upon m plus n, comma m1 y2 plus m2 y1 upon m plus n. This is known as ए फॉर्मूला से हम कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालेंगे तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला. क्या बोलते हैं इसको? इफ द रेशियो इज के इज टू 1, सपोज रेशियो फ्रैक्शन में नहीं है 2:1 या 3:1 पूरे होल नंबर में, हाँ, रेशियो इज के इज टू 1, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी? Then coordinates of P are, इसमें हम kx2 plus x1 upon k plus 1, comma ky2 plus y1 upon k plus 1 ऐसा आएगा. क्लियर? m1 m2 की जगह k is to 1, m1 की जगह k and m2 की जगह 1. Okay? And if P is the midpoint, if P is the midpoint of AB, then ratio will be 1:1, okay? The ratio will be 1:1. So what are the coordinates of P? Coordinates of midpoint. मिड P R क्या आएगा? x1 प्लस x2 by 2 कॉमा y1 प्लस y2 by 2. क्लियर? क्लियर? So are you clear all three cases? For example, suppose you are asked find the coordinates
of point P divide AB in ratio 3:1 internally. In your course only internal ratio, जब 11 में आएगा तो externally आएगा. Internally from A. From जो point है ना, from A मतलब AP upon BP is 3:1 like that. जो from जो point है उसको x1 y1 लेने का, जो divide करता है वो xy और जो बाकी बच गया वो x2 y2. Okay, that you keep in your mind. From A, where coordinates of A are given as 4 minus 3 and B are given as 8, 5. R क्या आएंगे कोऑर्डिनेट बोलो तो? X will be 3 into 8 plus 1 into 4 upon 4. So it is coming 7. And Y will be 3 into 5 plus 1 into minus 3 upon 4. And that is coming as 3. So what are the coordinates of P? The coordinates of P are 7, 3. Clear? The coordinates of P are 7, 3. Clear? Suppose I will give you another example. Find the अब उल्टा find the ratio. Ratio दिया था और coordinate पूछा. अभी find the ratio in which here coordinates of all 3 points are given and you are asked to find out the ratio. Find the ratio in which the y-axis मतलब coordinate of P नहीं दिया है, y-axis दिया है. Divide the line segment joining the points 5 minus 6 and minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. Do you understand the question? मैंने आपको सिखाया था कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लेना है तो क्या लेने का हम लेट दी रेशियो हम एज्यूम करते हैं रेशियो इज k:1 एंड पॉइंट y एक्सिस पर लेते हैं पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी टेकन एज 0y. सो इधर कितने अननोन आए k एंड y, 2 अननोन एंड 2 कंडीशन. अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 5 माइनस 6. इसके नीचे क्या लिखेंगे x1 y1. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं -1 -4. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं बी की कोऑर्डिनेट -4 सॉरी -1 -4. क्लियर? तो इसको हम x2 y2 ले लेंगे. ओके. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हम क्या लेंगे 5 माइनस 6. बी के क्या लेंगे हम -1 -4. ए के कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे x1 y1. बी के x2 y2. एन पी के कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे xy मगर इधर 0y है और रेशियो क्या लेंगे k:1. सो हम क्या लाएंगे 0y शुड बी रिटर्न एज k into x2. सो इट इज k into x2 plus x1 upon k plus 1 and k into y2 plus y1 upon k plus 1. This is the section formula. Now I put the value 0y is k into -1
plus 5, clear, upon k plus 1, k into minus 4, minus 6 upon k plus 1, clear. So if I compare it, minus k plus 5 upon k plus 1 should be equated with 0. Right? So that implies my k is 5. Clear? And when I put value of k in y is क्या लिखेंगे हम? k की जगह लिखेंगे 5. 5 into minus 4. Right? Minus 6 upon 5 plus 1. So it is minus 26 by 6. So it is minus 13 by 3. So what are the coordinates of P? 0 minus 13 by 3. And what is the ratio? Ratio is 5:1. Clear? Coordinates are 0, minus 13 by 3. Clear? Ratio is 5:1 and coordinates of P are 0, minus 13 by 3. Are you clear how to do it? Now your 7.2 is totally based on what? Section formula. किसके पर बेस है तुम्हारी 7.2? It is based on section formula. Full exercise is based on section formula. Okay?